अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूएफ रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो दिस इज उसामा, दिस इज मार्जिया, दिस इज उमर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक तो हमें फिर से एक मजे का टॉपिक लेके आपके सामने हम लोग हाजिर हो चुके हैं। तो उमर भाई आज हम किस पे वीडियो बनाने बिल्कुल, आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइटल है जी बांग्लादेश इज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और जो चैनल नेम है प्रोजेक्ट नाइटफॉल का ये वीडियो है। इसका आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप इनके चैनल को भी लाइक फॉलो करें, शेयर करें। तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि ऐसा क्या है वीडियो में और देखते हैं, फिर बाद में पता चलेगा, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले गाइस प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। स्टे विद अस। हैवी गो। Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, Night Fam, it's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's back-minded, third world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. First up, I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the 2 billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan, and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy to keeping peace, Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the 3rd largest military in South Asia. Now, Night Fam, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the 2nd poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only 3 years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengal certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland, a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit to countries for their positives. Bangladesh may be a young country, and of course it has so many things to work on. I could literally make a full video based on just the negatives, but why would I do it? There are so many people already who just focus on the negatives.
this video is different. The fact that Bangladesh managed to become one of the fastest growing economies, literally from being the second poorest country in the world, made Bangladesh be the voice of all the underrated nations that are on the way to the top. जी, तो आपने देखा कि बांग्लादेश का जो ये वीडियो का टाइटल था बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, और उन्होंने जिस तरीके से बताया यार कि बांग्लादेश जो है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी जो है फाउंडर, उनके को फाउंडर रह चुके हैं, और उसके अलावा जो है इंडस्ट्री, गारमेंट्स की अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो गारमेंट इंडस्ट्री में तो वैसे ही जो बांग्लादेश वो सेकेंड लार्जेस्ट आता है कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया, और बिजी बहुत है, मतलब आपको हर वक्त रश देखने को मिलेगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यार 80% वुमेन्स जो हैं वो वर्कर हैं बांग्लादेश में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हाँ वो भी वुमेन्स है, और बहुत जबरदस्त ये बात है कि औरतों को इन्होंने आगे रखा हुआ है इस चीज के लिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है, औरतों को आगे रखा हुआ है, और इसी वजह से जो है बांग्लादेश जो है बहुत आगे तरक्की उसने की है, और फास्टेस्ट जो ग्रोइंग कर रहा है ना इस वक्त इकोनॉमी में बांग्लादेश है। तो ये हमारी अच्छी बात है कि औरतों के लिए, कि औरतों को इस तरह जॉब्स वगैरह होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है ताकि वहाँ की गुर्बत जो है वो खत्म हो, औरतें भी अपने हक के लिए, और वहाँ की वुमेन्स बहुत पावरफुल है। हाँ बिल्कुल, वो काम में आगे हैं, काम में आगे, और हार्ड वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो है बांग्लादेश में जो है वो मतलब बेरोजगारी इतनी नहीं रही, अब वो जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो ये एक बड़ी एक अच्छी बात है, बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट जिसमें जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में देखने को मिलती है, रश बहुत ज़्यादा रहता है, हमने अक्सर वीडियोस में देखा है कि रश बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर खाने की बात की जाए तो खाने भी बड़े मज़े के, बहुत मज़े के खाने होते हैं, खाने बड़े मज़े के होते हैं, जो काफ़ी डिशेस है वो हमारे में भी खाई जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ जो हैं वो वहीं की हैं जो हमने नहीं टेस्ट की, जिनके बारे में पता भी नहीं था, कुछ ऐसी भी हैं जिनके नाम है वो हम लोग यहाँ पे खाते हैं पर नाम थोड़ा चेंज है, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है। तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने फैक्ट्स बताए इसमें, और बड़ा मजा आया, और वहाँ के बहुत ज्यादा ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो यहाँ पे भी फ्रूट्स हम खाते हैं। हाँ, और अच्छा कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि बांग्लादेश का कोई फल यहाँ पे आ चुका है यार। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कोई वीडियो उस तरह की देखी थी, तो पता नहीं अब कौन सा वो फल है, हम ट्राई भी करेंगे और उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हम इस तरह की वीडियो हमने देखी और काफी मजा आया यार इस तरह की वीडियो देख के। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपने हमें कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप मजीद किसी अच्छी वीडियोस पे जो है वो रिएक्शन अगर देखना चाहते हैं तो हमें प्लीज जो है उसका लिंक जो आप इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, और कॉमेंट सेक्शन पे भी आप उसका लिंक सेंड कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पे जो है वो वीडियो करें, और आप हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार देते जाइए जैसे आप पहले देते आ रहे हैं। तो बिल्कुल, काफी ज्यादा परेशान था, उमर भाई को कह रहे थे यार व्यूज नहीं उमर भाई आ रहे। हाँ बिल्कुल, आप लगता है वीडियोस नहीं देख रहे, तो आप हमारी बहुत ज्यादा वीडियोस देखें, और इसी तरह मजे के वीडियोस आप हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।